Hi friends, welcome to Money for Me Stock Market Educational Hub. Again we will see Nifty 50 and Bank Nifty chart analysis as well as little bit options data. So below are our details, website, email ID and contact number. Also there is a Telegram channel link. If you are doing intraday trading, so you can join our Telegram channel for a live market updates and Nifty Bank Nifty levels. Right now we will see Dow Jones chart, that is index of a US market. The reason is our market is reacting based on the US market, that is gap up, gap down, or a US market is a trend changer for us. So if you see, Dow Jones is trading in a good higher high higher low trend, that is uptrend. If we see, so higher high higher low, higher high higher low, higher high higher low. Then in the last week it has made a higher low, and right now it has broken previous top. This top here was a small top. So Dow Jones has closed at the lifetime high and it is in a green. So on tomorrow, that is Monday, we will open a gap up. There are more chances we will open gap up. Okay, so trend is bullish as per global market, as per US market, and we will also open gap up. But still we have to check our charts. So let's come to the Nifty 50 chart. So here is a Nifty 50 chart, and each candle is daily candle. So right now we are seeing a line chart. So in the last week we have seen there was a inverted head and shoulder on a Nifty 50, but we were need a breakout. But if you see, यहाँ पे Nifty 50 ने breakout नहीं दिया है, so still we are in a neutral zone. If we check chart little bit zoomer, so you can see here Nifty is trading in this zone. So here is a resistance, that is around 14,900, and here is a support, that is 14,650. So Nifty 50 is trading in a one zone. We need a breakout for more up moves, otherwise we need a breakdown for more down moves. So here is a strong support, that is around 14,300, 400, and one more support, that is 14,650. So it is also important. But Nifty has given a signal of a uptrend because it has made new higher low above the previous higher low. Okay, so but need a confirmation, that is breakout. So trend is neutral right now for swing traders. As we have said in a last video, we need a breakout. So still we need a breakout. Okay, so swing trading के लिए अभी neutral zone है. So let's come to the intraday chart, that is 15 minutes chart. Each candle is 15 minutes. So if you see, so you can see here Nifty has made a double top and given a breakdown. Okay, and right now trading below this support, and now right now this support becomes a resistance, or we can say that it becomes a resistance. So Nifty is trading in a lower low, lower high, lower low, lower high trend. So here is a strong support for a intraday, this bottom. If it breaks, so next target is this, and next target is around directly here. So we have to wait and watch for tomorrow's opening, and if market opens gap up around here, whatever it is, here is a resistance. So market यहाँ पे open होता है, so again we have to wait for some correction, that is buy on dips market. So dip आता है तो हम buy करेंगे, but still we have to take confirmations on intraday chart also. Okay, we will not take any direct moves. Okay, we will wait some corrections or confirmations. So ये तो गया Nifty 50 का. Now come to the Bank Nifty. Nifty Bank. Here is a Nifty Bank. So here is a line chart of Nifty Bank, and if we click on a candle chart, so trend is purely downtrend, that is lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी लास्ट वीक में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्रिएट किया था, बट स्टिल वहीं से बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया है, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, एंड दिस वाज द इम्पोर्टेंट सपोर्ट हियर. दिस बॉटम ऑफ द हेड वाज अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट फॉर स्विंग ट्रेडर्स. सो यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया है, बट राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट अ
again important support, that is 32,500. so this is the very important support और crucial support. अगर ये break होता है so next target for bank nifty around here, that is 30,000. so यहाँ से और 2000 से 2500 पॉइंट का फॉल एक्सपेक्टेड है अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक डाउन देता है तो. लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. सेम. ओके, नाउ कम टू दी one more strategy. If swing traders want to buy or short something, so they can go for Nifty 50 for long side, and they want to short something, so they can go for a Bank Nifty, because Bank Nifty यहाँ पे चार्ट पे वीक लग रहा है और Nifty 50 यहाँ पे न्यूट्रल है. स्टिल इट इज लुकिंग अ स्ट्रॉन्ग फॉर अ स्विंग ट्रेडर्स. नाउ कम टू द 15 मिनट्स. सो यहाँ पे चार्ट देखे 15 मिनट का. सो स्टिल इट इज, you can say that here is a inverted, sorry not inverted, here is a head and shoulder. तो यहाँ पे shoulder 1 head and this is shoulder 2. so यहाँ पे again एक negative chart pattern create हुआ है, that is major chart pattern. we need a breakdown. so here is a important support. so अगर यहाँ पे ये breakdown भी आता है so ये intraday के लिए बहुत अच्छा short call होगा बैंक निफ्टी के ऊपर. but there are little bit chances are less for breakdown because US market is a good and closes at a लाइफ टाइम हाई. सो यहाँ पे ट्रेंड लोअर लो लोअर हाई है और यहाँ पे एक मेजर निगेटिव चार्ट पैटर्न भी क्रिएट हुआ है. सो यहाँ पे हमें अगेन कंफर्मेशन की वेट एंड वॉच करनी है. सो ये तो हो गया निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस. लेट्स कम टू दी ऑप्शंस डेटा रीडिंग. सो हियर इज द ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी 50 एंड इट इज़ अ वीकली ऑप्शन चेन. सो इफ वी कैन सी, सो यहाँ पे अगर हम देखें सो कॉल साइड में अगर मैं देखूँ सो एवरी कॉल हैज़ अ closed in a red on a last Friday. and if you see, so here is a most of the puts are also in a red, but if you see percentage wise, so there are more call percentage is down. so we can say that there is a more call writing. so call writer यहाँ पे बहुत most active हो चुके हैं या call writing करके बैठे हैं. so as per options data, here is a strong resistance, that is 15,000, and very strong support. so strong support is around, that is 14,700. so as per our chart, so there is support around 14,650, and as per options data there is support 14,700 and resistance is around 15,000. so as per options data trend is negative, but still options data change होने के लिए टाइम नहीं लगता है. if कैश के स्टॉक्स में अच्छा बाइंग आता है तो ऑप्शन डेटा इमीडिएटली चेंज हो जाएगा. सो वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर अ मंडे ओपनिंग. बट एज पर ऑप्शन डेटा देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस अराउंड 15,000. कॉल राइटर यहाँ पे पूरे का पूरा ट्राई करेंगे कि निफ्टी 50 को 15,000 के ऊपर नहीं जाने देंगे. सो लेट्स सी इफ यू आर गोइंग टू बाय निफ्टी 50, सो स्टिल वी विल लुकिंग फॉर अ 15,000 टारगेट. दैट्स इट. हम उससे ज़्यादा टारगेट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं. so here is a Nifty 50. so now come to the Bank Nifty. let's see option chain of Bank Nifty. so यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी देखूँ so यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे जो ऑप्शन चेन है कॉल साइड में पूरा का पूरा रेड है. कॉल की प्राइसेस, कॉल के प्रीमियम के प्राइसेस यहाँ पे गिर के बंद हुए. और मैं अगर पुट साइड में देखूँ सो पुट साइड में पूरे का पूरा ग्रीन है. सो हियर इज अ क्लियर ट्रेंड, बैंक निफ्टी इज नेगेटिव. यहाँ पे जो ऑप्शंस राइटर है एंड हियर इज ऑप्शंस बायर्स, सो बोथ आर नेगेटिव ऑन अ बैंक निफ्टी. जैसे हमने चार्ट पे भी देखा, मैंने बोला भी कि स्विंग ट्रेडर को अगर शॉर्ट करना है तो बैंक निफ्टी प्रेफर कीजिए, बाय करना है तो निफ्टी 50 प्रेफर कीजिए. एज पर ऑप्शंस डेटा हियर इज द सेम, and as per options data we are looking targets of in a bank nifty. Our first target is 32,000, then we are looking for 31,500. and where is the strong resistance? so strong resistance is 32,500, then next resistance is around 33,000. so here are the strong support and resistance, and trend is strongly negative, but still we have to wait and watch for a confirmation. आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आएगा. सो लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीक.